Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub. Assalamualaikum, this is Naja. Well guys, once again we are making videos for you from Madian Valley. This is in north of Pakistan, Sawat, and we are staying at Madian Hotel, and this is the beautiful balcony of the hotel where we are making these videos for you. हाँ जी, और मैं उल्टा स्कूटर चला रही हूँ इस टाइम का। नहीं हुन सिद्धा ही चला रही है, हेलमेट पा ले, तेरी मेहरबानी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा जी मेरा ख्याल क्वेश्चन मुझे पूछ लेना चाहिए। It's a good idea. Exactly. एनजी करिया करो तुसी मेरा मुंह बंद कर दिया करो। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो नहीं पहले एक कमेंट और कर ला। हाँ आज ते लग रहा है छल्ली है बाल मुंह पे आ रहे ना कौन होती कौन छल्लियाँ वो छल्ली लग रही जो आप छल्ली खोली दिए थे वाल होने छल्ली से मुझे याद है कल इन्होंने मुझे खिलानी थी और कहा था कि मैं खिला के रहूंगा ढूंढ के रहूंगा किधर के छल्लियाँ नहीं खाई दिया छल्लियाँ नहीं खाई नाम क्या था उसका क्या पॉइंट हाँ सवात चल्ली सेंटर चल्ली हमारे यहाँ हर तरह का चल्ली मौजूद है सवात चल्ली सेंटर तो चल चलिए क्वेश्चन कर हाँ जी चल्ली समझ दे हो ना चल्ली इफ यू नो द मीनिंग ऑफ चल्ली कमेंट द मीनिंग ऑफ चल्ली चल चलिए चला की लबदा फिरे अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है जो आइल्ट्स में there is a question type I tell you I told her before okay I tell you वैसे मुझे क्वेश्चन याद था मैंने मुझे कहा ये क्वेश्चन ये पूछो ना मैंने कहा क्या और इनको भी किसी ने बताया है I tell you I told her before okay if she forgot the question नहीं वैसे मैं भूली नहीं हूँ yeah the question is this in sentence completion with the box how to write the question answers because sometimes instead of writing A B C D students write the words which are given exactly okay listen there is a safe चलना एंड टाइम में वीडियो बन गई आधी से क्या तो क्वेश्चन क्या था yeah all right there's a question type sentence completion with the box now what is that for sentence completion with the box first there is a summary so you have to find the answer to the question in the passage one word and then you have to match that one word with the box of words and these words in the box are labeled what is labeled A B C D and all that well Shmaila let me tell you one thing in IELTS reading whenever anything is labeled you will write those labels what is label A B C D E F A tomato B potato C onion like that okay C onion I'm not saying A for apple B for bear I said A potato now potato doesn't start with A addi tusiani galla maar di all right ignore her इतने उल्टे सीधे मीनिंग बनाए हुए थे ABC no I'm telling you four options option A potato option B tomato आप समझ जाइए otherwise option A apple option B boy option C kuri churi vargi kuri all right let's see okay so you have to write those those labels what happens for example you find the word in the passage right the word is something and then you find the synonym of that word now what do the students do sometimes they ignore those words given and they write the word directly from the passage second mistake is instead of writing A B C D they see what is the word after A for example after A it's written chili after B it's written onion so instead of writing B they write onion as the right answer so and some students who are extra careful they write A also and they write the word as well all these options will make your answers wrong अच्छा सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती अब अगर A का के आगे उन्होंने ऑनियन दिया हुआ है तो अगर वो भी लिख दिया तो बात wrong no listen when they give you instructions for a question type because you know they only accept then labels you you must follow those instructions that's it you cannot argue about that okay so in sentence completion with the box summary completion with the box you have to be careful instead of writing A and the word or only the word your answer will be wrong just write the labels A B C or D all the best guys thank you very much I teach IELTS online all over the world and on campus in Lahore if you want to be the part of my online or on campus IELTS classes my WhatsApp number is given you can contact me for that Asad Yaqub and Shumaila Najam Challi
विश चल्ली चली wish you all the All the best take care bye bye खुदा हाफिज